Assalamu alaikum students. I am your teacher Sumayya Khan. Students, today we are going to learn the topic covalent bond from the chapter chemical bonding. Now what is covalent bond? A bond that is formed by the sharing of electrons between the different atoms of the same element or different element is known as covalent bond. For example, let's take the example of chlorine molecule. Chlorine is a diatomic molecule, Cl2. Okay. Now the electronic configuration of chlorine is what? Chlorine's atomic number is 17 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay. The third shell is the valence shell for chlorine. Okay, this is the outermost shell of chlorine and it contains 7 electrons in it. Okay, so the octet of chlorine is incomplete by only 1 electron. To complete its octet, chlorine requires 1 more electron. So when chlorine, which has 7 electrons in its valence shell, approaches another chlorine atom which also has 7 electrons in its valence shell, they come close to each other and they tend to complete their octet by sharing 1 electron with each other. So when this chlorine goes near this chlorine, what happens then? Now both the chlorine, when approaches each other, this chlorine will give its 1 electron and the second chlorine will also give its 1 electron, and both of these will now have 8 electrons in their last shell, that is valence shell. In our previous lecture also I have told you students that atom tends to acquire 8 electrons in their valence shell except for hydrogen, because hydrogen can have only 2 or duplets of electron. So all the atoms tends to have that octet of electron in their valence shell. For attaining that state of octet, they may lose an electron or gain electron, or they may also share electron. Now this chlorine gives or shares 1 electron, this chlorine gives 1 electron, so the contribution is equal. Each of the atom is giving equal number of electron. Now this two or this pair of electron is equally shared by this chlorine atom and as well as by this chlorine atom. In this way, both the atoms can have 8 electrons and both can complete their octet. Now what is octet rule? I said that according to octet rule, an atom tends to gain, lose or share electron in order to acquire the 8 electrons, or in order to acquire the nearest noble gas electronic configuration, which is nothing but the 8 electrons in the valence shell. Understood? So what is covalent bond? How can we define covalent bond? The covalent bond is the force of attraction that exists between the atoms which are mutually sharing a pair of electrons with each other. Now these, in this example I have taken what? Chlorine molecule, and you can see that it is a mononuclear or homonuclear diatomic molecule. It means both the atoms are of same element. Okay, but it is not necessary. The atoms can also be of different elements. For example, HCl. Hydrogen have 1 electron and chlorine have 7 electrons in its outermost or valence shell. Now when hydrogen and chlorine approaches each other, what they do? The hydrogen gives its 1 electron and chlorine gives this 1 electron, and in this way chlorine can complete its octet and
hydrogen can complete its duplet. So hydrogen is showing similar state as helium and chlorine is acquiring similar configuration as argon Ap, and this is helium 2. So they are both now in a stable form with minimum energy and higher stability. So what is this covalent bond? It is the force which exists due to the mutual sharing of electrons between the two different atoms of different elements or of same elements. It is not necessary that these atoms should be of same elements. I hope you have understood. Now students, I wanted to tell you that though I have taught you ionic bond and covalent bond, but these two topics are omitted. But I wanted you to understand these two very nicely. Okay? अब एक बार और हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में. जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि जो एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं, ना किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं. वो लोग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उसको फिर इक्वली ही शेयर करते हैं. ओके, अभी जो हमने दो एग्जांपल्स देखे, दोनों में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही थी और सिंगल बॉन्ड बन रहा था उन एटम्स के बीच में. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही बॉन्ड बने एटम्स के बीच में, एक से ज्यादा बॉन्ड्स भी बन सकते हैं एंड दैट इज नोन एज मल्टीपल बॉन्ड. सो एटम्स कैन शेयर मोर देन one electron and they can form more than one bond with each other. Let us take an example of ethene. What is ethene? Ethene is CH2, CH2. Okay? In ethene what happens? The carbon atoms share, each carbon atom share two electrons with each other. Okay? In this way the carbon can have what? Complete its octet, okay, and can form multiple bond with the atom. So to complete an octet, the element can also form more than one bond. They can form double bond or triple bond, and they can share more than one pair of electron with each other. Like in this example, this carbon is sharing 2 electrons with the 2 electrons of the other carbon. In this way, this carbon have 8 electron, that is octet of this carbon is complete, and the octet of this carbon is complete like this. We know that hydrogen don't have octet, it have duplet. So you can see the duplets of hydrogens are also complete. So such type of bond that is made by the equal contribution and mutual sharing of the electron is known as covalent bond. Okay, I hope you all have understood what is meant by covalent bond. Now let's move towards our next topic. Our next topic is Lewis structure. Here we'll discuss how we can represent the simple molecule by taking into consideration Lewis dot structure. Okay. Now I have told you how to write the structure, Lewis structure for an atom. For example, let's first try to write the Lewis structure for simple elements, neutral atoms of an element. Okay? So let's take the second period. The second period starts with lithium. Lithium's atomic number is 3. Then comes beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. Okay, this is the second period. Now let's see how we can give the Lewis structure for these atoms. So according to Lewis structure, the symbol represents the kernel, that is
the inner shells and the nucleus of an atom. So for lithium, we know the configuration of lithium is 1s2, 2s1. The valence shell contains one electron in the shell. So here I will write what? For writing the Lewis structure, I will write the symbol of the lithium which is already there, and I will make what? A dot with it which represents the number of valence electron in the valence shell. In the same way for beryllium, we have electronic configuration 1s2, 2s2. So we'll write with the symbol, we'll write the two dots representing the electrons in the valence shell. For boron, the valence electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. Okay. Again, the electron is again entering the second shell, your valence shell, and you have how many electrons in the valence shell? 3 electrons. So you will write the symbol and you will write the 3 dots with it representing the number of electrons in the valence shell. All these are what? Lewis structure of an atom. In the same way, students, you can write it for all. For carbon it is 1s2, 2s2, 2p2. We have 4 electrons. So carbon will have 4 dots with its structure. Nitrogen will have 5 electrons. Okay. Oxygen will have 6 electrons. Fluorine will have 7 electrons. And neon will have the complete octet, that is 8 electrons in its valence shell. Okay. This is how we write the symbol of different atoms of different elements. We write the symbol of that atom along with the valence electron, representing them by a simple dots. Now let's understand how we can represent the simple molecules by using the Lewis structure. Okay. While writing the Lewis structure for simple molecules, we'll follow some steps. Okay. Let us take an example of carbon monoxide and let's see how we can write the Lewis structure for carbon monoxide. The first step for writing the Lewis structure of any molecule, you have to count the number of valence electrons in a molecule. So our example is carbon monoxide, and the first step is to count the number of valence electrons in a molecule. Okay. So let's see, we have carbon monoxide. The configuration of carbon we know is 1s2, 2s2, 2p2, and of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Because carbon's atomic number is 6 and oxygen's atomic number is 8. Now what is their number of valence electron? The number of valence electrons are what? The electrons that are present in the valence shell. So in both the atoms, second shell is their outermost shell or valence shell. So carbon contains how many electrons? Carbon contains 4 valence electrons. Okay. And how many electrons are there with oxygen? Valence electron. So we can see oxygen contains 6 valence electron. So how many total valence electron we have? So the total number of valence electrons is what? 4 plus 6, 4 of carbon and 6 of oxygen, and that will be your total 10 electrons. So this was the first step of writing the molecular structure.
according to Lewis method. Count the total number of valence electron. आप क्या देखते हो, कौन कौन से एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको काउंट करते हो और उनको प्लस करके बोलते हो कि दीज मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. Now I hope you have understood the first step. Now your second step is to write the skeletal structure of the molecule. Now how to write the skeletal structure? Whatever elements are there in the molecule, you write them together with a little space between them. This is a simple diatomic molecule. ये एक simple atom molecule है जो सिर्फ दो एटम से बना है, तो इसका skeletal structure हो जाएगा ये. This is the skeleton. You are just writing the elements of the molecule together with little space in them. Then comes your third step. Third step is what? Your third step is to draw a single bond between the atoms. Okay? Now in the next step we will draw what? A single bond between them. It means we will share a pair of electrons between both the atoms. So out of 10 valence electrons, we have just now shown what? 2 electrons, and we are showing that they are bonded by single bond. You can use this method as well as this method. Now in this way, students, you can see that the octet of both the atom is not complete. किसी भी एटम के पास ना कार्बन के पास और ना ही ऑक्सीजन के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी दैट इफ the remaining we use the remaining electrons, what will happen? 10 में से 8 दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए. How many are left? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now let's see that is the octet is complete. तो आप देखोगे ऑक्सीजन का octet is complete. It has 8 electrons, but carbon has only 4 electrons. The octet of carbon is not complete. We had only 10 electrons. हमारे पास सिर्फ 10 electrons थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम ये 10 ही यूज कर सकते हैं. तो अब इसका octet कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना होगा? So whenever such thing happens, you use these pair of electrons and make a multiple bond between the atoms. जब ये होता है तो आप क्या करोगे? जब किसी एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है जैसे कि ऑक्सीजन का, लेकिन दूसरे का कंप्लीट नहीं हो रहा है जैसे कि कार्बन का, तब आप क्या करोगे? ये जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, जोड़ी है, इनको यूज करोगे और मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे. डबल बॉन्ड बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी भी जरूरत होगी वो. तो अब देखते हैं कि अगर हम कार्बन के बीच में एक पेयर के बजाय 2 पेयर शेयर करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमने सोचो ये वाला ले लिया, अब इसके पास ये वाला समझो हमने ले लिया, तो अब इसके पास बचा है इधर 2 2 और कार्बन के पास इधर 2. अगेन अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अब भी कंप्लीट नहीं है. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, यू आर गेटिंग इट? We have used 10 electron, but still the octet of carbon is not complete. है ना? 1 2 3 4 5 6. ये सिर्फ 6 हुए, लेकिन ऑक्सीजन के 8 हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is also not correct because the octet should be complete according to the octet rule. तो अब क्या करेंगे? Let's see कि if by making one more bond can we complete the octet? क्या हम एक और बॉन्ड बना सकते हैं? तो अब क्या होगा? ये आपका कार्बन
ये ऑक्सीजन पहले ये लोग एक शेयर कर रहे थे, फिर दो शेयर कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि ये तीन जोड़ियां शेयर कर रहे, 3 pairs are शेयर। तो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और ये ऑलरेडी पहले से था। नाउ योर ऑक्सीजन है ओनली 1 pair लेफ्ट हियर, और कार्बन का जो ये वाला पहले से था वो पहले से ही रहेगा। इट मीन्स दैट carbon and oxygen are sharing 3 pairs of electron so that the octet of both the elements are complete. Now you can see students that octet of carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's complete for carbon and it is also complete for oxygen. So this is the correct structure, and carbon and oxygen are making 3 bonds with each other. Each are having 1 lone pair left with them. So the bonding pair should be represented by the dash between the atoms, और जो लोन पेयर है, जो शेयर नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं लोन पेयर। उसको डॉट्स के जैसे ही आपको एंड में दिखाना होगा, ठीक है। What are the 3 steps? First, count the total number of valence electron. Second, draw the skeletal structure. Third, draw the single bond between the atoms. And the fourth step, this was your fourth step, you have to complete the octet of each element by making multiple bond between them if it is not complete or not being completed easily. अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाने से उनमें से किसी एक का भी ऑक्टेट बनने से रह जाता है, तो आप एक से ज्यादा बॉन्ड बना के देखोगे और देखोगे कि क्या अब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल। तो व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज टू काउंट द total number of valence electron. So we know that nitrogen has the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. In its valence shell, it has 5 valence electrons. ठीक है? तो how many nitrogen भी है? हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे क्या? 2 into 5, that is 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप के हिसाब से हम लोग लिखेंगे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो हमने 2 नाइट्रोजन एटम्स को लिख लिया साथ में। थर्ड स्टेप के हिसाब से हम क्या करेंगे? उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाओ या ऐसे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 आर यूज्ड। ओके, नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स में लगा दूं इस तरह से, तो ये वाले नाइट्रोजन का मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ लेट्स सी कि सेकेंड वाले नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ है। 1, 2, 3, 4। इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट। तो जब भी ऐसा होगा तो आप हमेशा क्या करोगे? यू विल ट्राई टू यूज these lone pair of electrons and you will try to make multiple bonds. तो अब हम करेंगे क्या? मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए अब क्या करेंगे? हम लोग नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। नए स्ट्रक्चर में देखिए अब क्या करेंगे? ये जो नाइट्रोजन था एक शेयर कर रहा था पेयर, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब इट शुड शेयर 1, 2 जो ऑलरेडी कर रहा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। एक और इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहां से ले लूंगी, तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दिस वन वाज ऑलरेडी देयर, ये भी मैंने ले लिया, ये भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आ गया 1 पेयर,
2 pair, 3 pairs. It means that these two are sharing 3 pairs of electrons. It means they are having triple bond with each other. Now you can check whether the octet is complete or not. आप देख सकते हो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं. तो आप देख लो कि इसका भी पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 आयन. अभी तक हमने सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखे थे, अब हम पॉली एटॉमिक आयन देख रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल या आयन. ठीक है, अब पहले स्टेप इज सेम, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ आपके पास एक नाइट्रोजन है और एक कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है. तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले 1s2 2s2 2p3. फिर ऑक्सीजन का लिखो 1s2 2s2 2p4. हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हो दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5, that is 5 of nitrogen plus 3 multiplied by 6 because we have 3 oxygen plus there is a negative charge, so 1 electron due to negative charge. ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 5 plus 18 plus 1, that is 24 electrons are there. We have 24 valence electron in case of nitrate ion NO3 ion. So this was the first step. We have counted the total number of valence electrons. Now the second step is to write the skeletal structure. We'll draw the skeletal structure. अब अपने पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है. Whenever you have polyatomic molecule, you write the less electronegative element in the center. अब आपके पास 2 एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा से. तो जब भी ऐसा हो तो उनमें से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम सेंटर में लिखते हैं. तो इन केस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है 3 वो उसके सराउंडिंग में लिखना पड़ेगा. ठीक है, so this is the skeletal structure. This was your second step. Okay, now let's go to the third step. आप इसको सेपरेटली लिखना. अब मैं इसी में आपको थर्ड स्टेप बता रही हूँ. Your third step is to make a single bond. अब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हम लोग. 1 2 3. You may draw a dash or you may also write the dots. Okay, in this way. Both are correct. अब सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद how many valence electrons you have used? Out of 24 you can see we have used 6 valence electrons and we are left with 18 more. So now let's try to complete the octet of each element. आप किधर से भी शुरू कर दो और ऑक्टेट साइड से भरना शुरू करो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी है. 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी. 6 6 6 18 2 2 2 6 24. यानी अब आपने क्या किया? You have used all the 24 valence electrons. Okay? आपने पूरे 24 valence electrons use कर लिए to complete the octet. Now let's check whether the octet of each element is complete or not.
अब आप देखोगे कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। इसका कंप्लीट है, बराबर। इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। पर नाइट्रोजन के ऑक्टेट को देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर द नाइट्रोजन एटम in the valence shell? 1 2 3 4 5 6. So octet of nitrogen is incomplete. So whenever this happens, we always make what? Multiple bond. So let's make multiple bond. How many multiple bonds are needed? We need only 2 electrons. हमको सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हमको सिर्फ एक और बॉन्ड चाहिए। तो अब क्या होगा, ऑल 3 ऑक्सीजन आर सेम, तो कोई भी एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसके साथ शेयर कर लेगा? नाइट्रोजन के साथ। तो लेट्स से कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस कम्स हियर एंड इट मेक्स अ डबल बॉन्ड। इट मींस दिस फ्रॉम हियर कम्स एंड गेट दिस and is shared with this nitrogen. Okay, so now you can see that octet of this oxygen is again it's complete, but octet of nitrogen is also completed now. So here what happens, this is your structure of nitrate ion. So in the end, students, whenever you have ions, you make a square box and draw this negative charge on it. Okay, this is how we write the Lewis structure for different molecules. I hope you have understood. There are more examples given in the textbook. You go through it and try to follow the steps and try to make the Lewis structure. So let's finish our lecture today only here only beta. Next time we will meet in the lecture inshallah.